गाइस, इंडिया में ऑटोमेटिक वॉचेस के नाम पर टाइटन और टाइमेक्स ने लोगों को बहुत बेवकूफ बनाया है। अगर आपको 10,000 से कम में एक ऑटोमेटिक वॉच चाहिए तो आपके ऑप्शंस घट के इन्हीं ब्रांड्स के पास आ जाते हैं, एल्बा, इनविक्टा, बेनियर एंड इवन आर्गोस। 10,000 में ऑटोमेटिक वॉच प्रोवाइड करना कोई बड़ी बात नहीं है, और यही प्रूव करती है दिल्ली वॉच कंपनी की ये वॉच। दिस बीट्स एवरी वॉच दैट यू कैन फाइंड इन इंडिया, इवन डबल इट्स प्राइस। The specifications are out of the world and this watch ticks all the boxes. Guys, ये वॉच मैंने खुद खरीदी है। इसे यूज करते हुए मुझे सिर्फ 2 दिन हुए हैं। इन 2 दिनों में मुझे जो भी समझ आया वो मैं अपना एक्सपीरियंस एज अ कस्टमर आपके साथ शेयर करूंगा, so that you don't make a mistake while buying a watch. So अनबॉक्सिंग करने से पहले let's check out what's on my wrist today. So today I'm wearing this watch by Sonata. I have a 6.5 inch wrist for your reference. और मैंने इस वॉच को ऑलरेडी अपने चैनल पे रिव्यू कर रखा है, सो गो चेक इट आउट। गाइस, लेट्स अनबॉक्स द वॉच। गाइस, जैसा मैंने बताया, मैं इस वॉच को पहले ही अनबॉक्स कर चुका हूं, सो लेट्स चेक आउट हाउ वाज द अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस। So this is the watch. This is the DWC Havelock automatic watch. Let's remove the plastic. Guys, out of the box, this watch feels really small. This is a 38mm dial. 38mm dial is not very famous for a dive watch. Guys, coming down to the specifications of the watch, मेरे एक हाथ में DWC Havelock और दूसरी साइड मैंने DWC की वेबसाइट खोल रखी है। Guys, the case material is 316L stainless steel. Guys, this is the best quality of stainless steel to use, and many expensive watch brands use 316L stainless steel in the construction of their watches. The loom is BGW9 Superluminova, and the loom, I tell you, is crazy on this watch. I'll put a loom shot in this video as well. Guys, the case diameter, as I told, is 38 mm. इस केस की हाइट है 13 mm. This is a chunky watch. Guys, the water resistance is mentioned on the watch. It is 200 meter of water resistance, and the strap is a silicone strap. Guys, the dial is very interesting. They have not tried to copy any other watch. The dial is coated with Swiss enamel and also has the Superluminova loom. The lug width is 20 mm, so all 20 mm straps will fit on this watch. The glass used in this watch is a sapphire crystal glass, so the glass will not scratch easily. The coinage bezel is made out of aluminium, and it is 120 unidirectional bezel. The caliber of this watch, that is the movement of this watch, is the most reliable movement, Seiko NH35 with a ghost date. गाइस, गोस्ट डेट का मतलब है कि ये मूवमेंट में कैपेसिटी है टू होस्ट अ डेट विंडो, बट DWC हैव नॉट प्रोवाइडेड द डेट विंडो, सो इट इज नाउ अ गोस्ट डेट, एंड द वारंटी पीरियड ऑन द मूवमेंट इज 1 year. So this was about the specifications of this DWC Havelock. So guys, this is the DWC Havelock in its full beauty. The strap is nice. The strap is not breathable, but still it feels really nice. This watch has a unidirectional 120 bezel. The bezel aligns perfectly with the markers. This watch has a Seiko NH35 movement. Let me open the strap so that we can get a better look at the case back of the watch.
So guys, this is how the case back of the DWC Havelock looks. The Havelock Island is imprinted on the back of the watch. It's written stainless steel 24 joules and Havelock Island sapphire crystal glass. Let me put the strap back on. Guys, इस वॉच की लूम बहुत ही ज़्यादा अच्छी है. I've tested that out और मैं आपको वीडियो में भी दिखाऊंगा. But before that, let's check the crown of the watch. So this is not a simple crown. The crown has the Havelock Island imprinted, and this is a screw down crown. That means we have to unscrew the crown first. I've taken the crown out and one push. This is how the crown works, screw down crown. Screw down crown helps the watch maintain its 200-meter water resistance. Guys, time to give a loom shot of this watch. देखिए वॉच अंधेरे में कैसी लगती है. So I'll turn off the lights. Guys, this is the loom on the DWC Havelock. मैंने इस घड़ी को सिर्फ 10-15 सेकंड के लिए सूरज की रोशनी में रखा था. And the loom has charged up beautifully. It is quite legible. Even in darkness, रात के 2-3 बजे भी ये लूम काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती है. So no complaints on the loom section. Guys, let's quickly wear this watch on our wrist. देखें वॉच रिस्ट पे कैसी लगती है. So I'll open up this sonata pose. Guys, this is how the DWC Havelock looks on my wrist. I have a 6.5 inch wrist for your reference. और पर्सनली ये घड़ी काफ़ी छोटी है, पर कैमरा में ये काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है. Guys, अगर आपका रिस्ट साइज 6.5 से ज़्यादा है, 7 इंच है, तो I would not suggest you to buy this watch. But if you have a slimmer wrist, then I would suggest you to buy this watch. This watch will look absolutely fab on your wrist. So yeah, this was the wrist shot of the DWC Havelock. Guys, I don't feel a need for pros and cons section in this video. फिर भी मैं आपको बताऊंगा इस वॉच में क्या खामियां हैं जो मुझे पर्सनली लगी. So the first one is that this watch has no date window. Seiko NH35 Movement can host a date window, पर DWC वालों ने डिसाइड करा कि वो इस वॉच में डेट विंडो नहीं देंगे. The second con or the second negative which I found about this watch is that this watch is a fingerprint magnet, as you can see. So these two were the only cons I could find. Not having a display case back, I don't consider that as a con. So guys, this was the full review of the DWC Havelock. I feel this is the best automatic watch you can buy under 10,000 rupees. And yeah, if you like the video, make sure you subscribe the channel. More such videos coming on the way.